नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित डिस्प्लेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बा अमेरिकार संविधान तार कौन साइलेंट फीचर्स वैशिष्ट्य रही तार कौन लंग क्वेश्चन आंसर टी मुझे शेयर करी और वीडियो आगे मुझे कहबी जे आप पीडीएफ बा नोट्स टी किपर भाव पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा। तो फास्ट टाइम देखिए ऑल्दो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग फीचर्स इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बट द मोस्ट इंपोर्टेंट आर कि देख अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट कौन फीचर्स अच्छी कि खाली मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स गुड़िक देखा। तो फास्ट टाइम देखा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन लिखित संविधान। तो कौन ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड इन 1787 एंड इनफोर्स इन 1789। तो 1787 है पुणी 1799 को इनफोर्स करागला। तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 आर्टिकल आते कौन 7 आर्टिकल अच्छी 3 ऑफ देम रिलेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ पावर्स लेजिस्लेटिव कौन जो 7टी आर्टिकल अच्छी 3टा आर्टिकल लेजिस्लेटिव पावर को रिलेट करछि। आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव एंड 3 जुडिशियरी। सुप्रीमेसी ऑफ नेशनल पावर आर्टिकल 6 रे नेशनल पावर सुपरमेसी से कौन मेंशन अच्छी एंड रैटिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 7। इट ऑल्सो हेल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। आर्टिकल 1 इज द लॉन्गेस्ट एंड कैन नॉट बी अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 1 सब लंबा आड़ा कौन कौन संशोधन कर लाइक अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल सिंगल सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूस द डिफेंस पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड व्हिच मीन्स दैट फ्रॉम अमेंडिंग इट ए special and difficult to procedure has to be followed. It consists 2 steps। तो 2 स्टेप अच्छी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेप कौन ना प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट एंड रैटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट कौन ना इधर 2 पार्टी 2/3 माने 67% ऑफ बोथ हाउस माने कि आसीबो ना सीनेट आसीबो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आसीबो शाल प्रपोज फॉर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन or on application of legislature of 2/3 states shall be call a convention for proposed amendment। ताहले कौन स्टेट कौन करियो से अमेंडमेंट को प्रपोज कर दबा। ratification of its proposal कौन ना the amendment shall be ratified by the legislature of 3/4। ये कौन से 3/3 होतला किंतु ये 3/4 हबो of all states or by convention of the 3/4 of state। तो it because of it this rigidity that the American Constitution has been amended by the only 27 times in 2000 years। तो यह बहुत कौन अनमनीय नुह से यह कौन हो ना 200 वर्ष केवल 27 थर ही आपको कौन संशोधन कर अमेरिकार संविधान को। नेक्स्ट देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी जनप्रिय सार्वभौमत्व अच्छी। तो इन यूएसए द पीपल रूल they have delegate their powers to the government and the government was its authority to the will of the people। The principle of popular sovereignty in stated in the preamble of constitution रे अच्छी जे कौन with the people of to or do ordain and establish this constitution for United States of America। ये तांगर मेंशन अच्छी preamble रे। नेक्स्ट देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन हम ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए प्रोवाइड्स फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेचर 2 हाउसेस इन द सेंटर। अकॉर्डिंगली आर्टिकल 1 ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन कांग्रेस। कांग्रेस अच्छी कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस कौन हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अपर हाउस रे अच्छे सीनेट रे अच्छी। नेक्स्ट देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कौन ना द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज 435 who are elected by the people through adult franchise method। adult franchise method रे 435 कौन मेंबर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्टिव बा निर्वाचित होती ए पीरियड ऑफ 2 years 2 वर्ष ପାଇଁ on the population basis of the state with a longer population gets more। जो स्टेट अधिक लोक था अधिक मेंबर जाती। स्टेट इन द हाउस लाइक कैलिफोर्निया हैज 53 मेंबर्स। तो कैलिफोर्निया रे अधिक पॉपुलेशन तो 53 मेंबर से जाती। सीनेट कौन हम ना द मेंबर्स ऑफ द सीनेट आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। Each state has 2 senators, meaning that state has 2 votes in Senate
These senators are elected for a period of 6 years on the party basis. The total number of senators is 100 or the total seats of are 50. तो 50टा सीट अच्छी 100 लोक जाती सीट कहीं गोटे ये किजन जापर यार कार्यकाल के वर्ष ना 6 वर्ष गोटे कार्यकाल में गोटे पार्टी बेसी जाती नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो पावर मध्य कौन बंटन मध्य होइछि ना था किपर होइछि ना डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द थ्री पिलर्स इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट to prevent interference of one institution in the affairs of another. The powers are divided among Congress, President and one the judiciary. Congress has the power to make law which outline general policies, set a sentence standards. A president can enforce the executive and administrative law. तो समस्त गुड कौन पावर्सटा डिवाइड हो जाए नेक्स्ट देखिए चेक एंड बैलेंस तो कौन पावर को चेक और बैलेंस केन करा जाउछि ना द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस लेड डाउन बाय द सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर्स कहीं ना गोटे जदि आम देखिबानी चेक करबा ताले से पावर को मिसयूज हो जिवो अपव्यवहार हो जिवो द पावर्स आर प्रोवाइडेड इन सच ए वे दैट इज प्रोवाइड्स ए चेक अपॉन अदर इंस्टीट्यूशन लाइक कौन एग्जांपल देखिबा ना प्रेसिडेंट कैन वीटो ए बिल पास्ड बाय द कांग्रेस. The Congress can pass legislation over presidential veto by the two-thirds majorities. The President has the power to appoint judges of Supreme Court subject to approval of the Senate. Next कौन देखिबा ना the Constitution has vested the powers of judicial review in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू जो आमर भी अच्छी न्यायिक पुनरावलोकन तांकर मध्य अच्छी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कैन अप्रूव reject or review any action taken by the president or laws made by the Congress act which did not make Marbury versus the medicine care. So all this indicates a system which makes compromise necessary, which is a sign of healthy democracy. It prevents the rise of dictators such well. नेक्स्ट देखिए कौन ना फेडरल सिस्टम तो फेडरल का संघ सिस्टम मध्य अच्छी द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मीन्स दैट पावर्स आर डिवाइडेड अमंग सेंटर एंड फेडरल गवर्नमेंट इन द स्टेट्स माने कौन सेंटर को फेडरल गवर्नमेंट को आउ स्टेट गवर्नमेंट रे पावर टा कौन डिवाइड होइछि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द फेडरल गवर्नमेंट हैज जुडिस्क्रिप्शन ओवर 18 मैटर्स एंड रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन स्टेट्स तो फेडरल स्टेट 18 मैटर और जो अवशिष्ट क्षमता को स्टेट को दिया जाइछि किंतु आम इंडिया अवशिष्ट क्षमता किए केंद्र सरकार करती किंतु अमेरिका ताहा अलगा स्टेट्स आर ऑटोनोमस बॉडीज एंड सेंटर कैन नॉट मिडिल इन देयर अफेयर्स एंड कौन स्टेट जहाँ सब कर मिडिल ये सेंटर कौन इंटरफेरेंस करबनी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब विवाद हुए ताले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड और सेटल द डिस्प्यूट जब ताले सुप्रीम कोर्ट को कौन ताहा जो डिस्प्यूटा को डिसाइड करेंगे आउ ताको सेटल मध्य करेंगे जो विवाद को समाधान करेंगे सुप्रीम कोर्ट करेंगे नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म कौन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स द पावर इलेक्शन and their matters related to the president. President is elected for a term of 4 years and is not answerable to Congress but cannot decision Congress. It has a cabinet to assist of in his running his executive powers. Next Republican. So Republican na the constitution calls for a republic system with a president also elected head of the state. Kaina head of state like president. The constitution derives its authority for the people and its supreme law and land. Neither center nor states can override it. Next is Bill of Rights. The Bill of Rights the first 10 amendment to the constitution Bill of Rights. The Bill of Rights provides for the rights of the people's property, liberty, freedom of speech, press, religion and assembly. जो बिल ऑफ राइट्स या सब कौन पीपल मानक प्रोवाइड करछि. नेक्स्ट देखिए डुअल सिटीजनशिप तो द्वैत नागरिक आम इंडिया रे सिंगल वन सिटीजनशिप अछि कि डुअल सिटीजनशिप अछि तो यह कौन ना द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डुअल सिटीजनशिप इन द कौन यूएस सिटीजन ऑफ यूएसए बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड द states where one is dominate domicile in Britain and Pakistan provides for a single citizenship.
ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ମାନେ ସପୋଜ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଗୋଟେ ସିଟିଜନ୍, ସେ ଫାଷ୍ଟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସିଟିଜନ୍ ପରେ ଯାଇକରି କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଆମେରିକାର ସିଟିଜନ୍, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଟିଜନ୍, ଏହାକୁ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍ କ'ଣ ନା ସେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଆମ ସପୋଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହଉ ସିଏ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏ ତାହା ନୁହଁ। ୟୁଏସ୍ରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଲୋକ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ନାଗରିକ ପରେ ୟୁଏସ୍ର ନାଗରିକ। ତାପରେ ହଁ ଡୁଆଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ। ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ କ'ଣ ନା ୱେନ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସେସ୍ ଇଫ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ହି ଡିସମିସ୍। ଯଦି କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ମନେକର ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଜଣେ ଯଦି କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଡିସମିସ୍ ହେଇଯିବ। ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସ୍ bears and makes fresh appointment under this system. A civil servant appointment by the president on political consideration cannot retain his office when an opposition president secures victory in polls. तो ये कौन साइलेंट फीचर देखिले यूएस कन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टाइम आपन सहित चाइनार साइलेंट फीचर टी आनिबि। तो एहिपरि वीडियो में चैनल एडी हंतु। थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो। जदि आपन नोट्स चाहती ता डिस्क्रिप्शन रे मो टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दीची, सेठे जॉइन हंतु, आपन मन यार मोस्ट मिल जाय।